Hello everyone. Now we are going to discuss the topic composite bars. So basically the basics of composite bars. अभी तक हमने ये पढ़ा कि बार्स का साइज अलग अलग था या जो भी है कंपोजिट मतलब ये हो गया कि कई सारी बार्स मिलकर एक पूरी असेंबली बना रही हैं और उनकी एंड कंडीशन कुछ भी हो सकती हैं अलग अलग. सो बट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इट मीन्स कि जब हम कई अलग अलग मटेरियल्स की बार अलग अलग साइज की लेके एक पूरी असेंबली बना रहे हैं और उसकी एंड कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, फिक्स्ड हो हिंज हो, उनको हमें सॉल्व करना है. So basically composite bars are those which are made of different materials or which are connected in the series form. So here is an example in which the external force P is acting on that structural member, and this structural member is made of steel and copper for two different materials. Okay, so free expansion of both bars is equals to expansion prevented by both bars. तो जो भी इसका एक्सपेंशन होगा दोनों बार्स का इज इक्वल्स टू एक्सपेंशन प्रिवेंशन बाय बोथ बार्स. जो भी एक्सपेंड होगा वो भी इसी के प्रिवेंशन को उसी को इक्वल कर देंगे. सो बेसिकली फॉर स्टील एंड कॉपर द वॉल्यूमेट्रिक चेंज इज इक्वल्स टू L into alpha into T for steel and L into alpha into T for copper is equals to PL upon AE for steel plus PL upon AE for copper. Here the thermal expansion of copper is greater than thermal expansion of steel. If external force for steel and copper is equals same, which gives the value of P. So basically the stresses for the different two materials in steel and copper are denoted by P upon AS and P upon AC, where AS is the area of steel and AC is the area of concrete. Sorry, copper. So for rigid support, the temperature compression is in upward or the positive direction, and the tension which is denoted by downward. So this is the phenomena of the composite bars. Here's a numerical problem performed in it. Here is the for two materials, the length of two materials are 1 meter. The thermal expansion for one material is 11 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, and for other material is 24 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. Modulus of elasticity is equals to 200 GPa for steel, and for other material is 70 GPa. Area of steel 100 mm square and area of other material या aluminium कह सकते हैं आप, which is 200 mm square. Temperature difference is equal to 58 degree minus 38 degrees 20 degree. ये टेम्परेचर दिया होगा एक मटेरियल का 58 और दूसरे का 38, डिफरेंस हमारा आ गया 20 डिग्री. So putting these values in the above studied formula in this equation, L into alpha into T for one material or for steel and L into alpha into T for aluminium. So L तो 1 दिया है हमारा, अल्फा 1 स्टील के लिए 11 10 to the power minus 6 into 20. T टेम्परेचर डिफरेंस 20 हो गया. Here 20 into 1 into 24 ये दिया is equals to PL upon AE. P दोनों में सेम है upon AE. A और E for steel और A और E for aluminium. L दोनों का 1 है, P सेम है. P की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी 5.76. So basically numericals are also very easy. In this topic also put the value, get the answer वाले numerical हैं सारे. So there is no difficulty to solving this. Next topic is when the bars are parallel to the each other. So uniform heating, no warping, as there is no bond and no support. Both copper and steel will expand individually up to heating and no stresses are induced. Net change in length of steel is equal to net change in length of copper. जो भी change in length आएगा overall दोनों में ही आएगा. Okay. For ideal composite material, alpha must be nearly equal. For ideal composite material, it means कि जो भी material आप एक दूसरे से add on करके एक पूरी assembly बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा important चीज़ ये होगी कि आपका जो thermal expansion है या thermal coefficient है, alpha उसकी value same होनी चाहिए, लगभग मिलनी चाहिए. Like concrete and steel, for both the value of thermal expansion is equals to 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, and both in compression in between rigid supports.
So basically this is the figure of copper and steel assembly. Now we are talking about the hoop stress और circumferential stress. स्टील रिंग वुडन व्हील अगर ये है और ये अगर रोटेट कर रहा है तो hoop stress के बाहर की ओर ऐसे पॉइंट से हर डायरेक्शन में लगेगी, which is denoted by sigma h. D is the initial diameter of the ring, capital D is the diameter of rigid wooden wheel, and capital D is the final diameter of the steel ring. So hoop strain is equals to pi d capital D minus pi into small d upon pi into d. Hoop stress ये हो गया आपका hoop strain, and now we are talking about the hoop stress. Sigma h is equals to epsilon h into e, d minus d upon small d into e. Tension in steel ring and compression in wooden wheel. So basically, minimum increase in temperature for fixing, epsilon h is equals to sigma t and d minus d upon d is equals to alpha t. यही सारे फॉर्मूले चल रहे हैं, अभी कुछ बाहर से नहीं आया है. यहाँ से t की वैल्यू आप निकालेंगे तो d minus small d upon alpha into small d आ जाएगा. So here is the numerical for this. A steel ring of 499 mm diameter is to be fitted over a wooden wheel of 500 mm diameter. स्टील रिंग मतलब आउटर डायमीटर जो है वो 499 स्टील रिंग दी हुई है और वुडन के ऊपर ये 500 mm की डायमीटर है वुडन की. इलास्टिसिटी स्टील के लिए 200 GPa and thermal expansion for steel is equals to 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. So we can easily determine the hoop stress developed, मतलब sigma h की वैल्यू निकालनी है, minimum increase in temperature for fixing, temperature increase या फिर del T निकालना है आपको. So hoop stress के लिए तो सीधा फॉर्मूला है del h is equals to d capital D minus small d upon small d into modulus of elasticity. So basically we can put the value of capital D 500 mm है, small d हमारा 499 है और E की वैल्यू 200 GPa दी हुई है. इससे हमारे सिग्मा h निकल आई which is hoop stress which is the value of 400.8 MPa. Now minimum temperature is equals to, ये टेम्परेचर वाला फॉर्मूले में हम रख देंगे कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन अल्फा d. कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन अल्फा d. कैपिटल D की वैल्यू 500, स्मॉल d 499, अल्फा की वैल्यू 12 into 10 to the power minus 6. तो ये आ गया आपका 167 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. So this is the numerical for the hoop stress in a hoop stress or circumferential stress. So now we are going for the topic complex stress and strain. तो अभी तक तो हमने सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा कि यहाँ एक डायरेक्शन में लग रही है चीजें और डिवाइड फर्दर नहीं हो रही, बट नाउ we need to study the complex stress and strain. So the basics of this topic is plane stress system. All the stress will be developing in one perpendicular plane only. For examples, beam, shaft and n thin member. अगर 2D स्ट्रेस सेंसर की बात करें, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई एंड टाउ वाई एक्स, ये आपका निकल के आएगा. और अगर इस फिगर की बात करी जाए तो ये एक फिगर है, इसमें 2D फिगर है. एक तो एक्स डायरेक्शन हो गया ये वाला, सिग्मा एक्स इधर, सिग्मा एक्स इधर. एक वाई डायरेक्शन हो गया, सिग्मा वाई इधर और सिग्मा वाई इधर. इसी के अलोंग टाउ एक्स वाई इधर जाएगा, टाउ वाई एक्स इधर जाएगा, टाउ वाई एक्स इधर आएगा. In a member or element, normal stresses are balanced, which is also known as force equilibrium. Shear stress are balanced by the moment equilibrium. So it is clear that for moment equilibrium, tau xy is equal to tau yx. Tau xy और मतलब tau xy और tau yx, अगर moment equilibrium आपको बनाना है तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए. For a 2D stress tensor, there will be a total of 4 stress components available. Among them, 3 are independent components. If horizontal shear stress is due to external loads, a vertical shear stress of opposite nature develops for balancing called complementary shear stress. So it means कि अगर आपका कोई external load लग रहा है, उसकी वजह से कोई stress generate हो रही है, then
A vertical shear stress of opposite nature develops for balancing called complementary shear stress. एक एक्सटर्नल लोड की वजह से एक कॉम्प्लीमेंट्री shear stress जनरेट होगी जो कि बैलेंस करेगी आपके इस एक्सटर्नल लोड को. स्ट्रेस कंपोनेंट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है तो उसकी ये कई सारे एलिमेंट्स हैं, सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा. सिग्मा थीटा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई upon 2 plus sigma x minus sigma y upon 2 into cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta, and tau theta is equal to sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta minus tau xy cos 2 theta. इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. So now a basic numerical of that inclined plane की अगर बात करी जाए कि एक x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है या स्ट्रेसेस लग रही हैं. x डायरेक्शन की बात करी जाए तो 30 MPa माइनस का, y डायरेक्शन की अगर ये फिगर दिया हुआ है और ये आपका कंप्रेशन में है तो आप इसको नेगेटिव लोगे, x डायरेक्शन में माइनस 30 MPa ले लिया गया. y डायरेक्शन की बात की जाए तो वो टेंशन टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इट मींस वो पॉजिटिव होगा सिग्मा, एंड टाउ xy और डाउनवर्ड आपका लग रहा है विच इज माइनस 20 MPa एंड थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ओके, सो बेसिकली सिग्मा थीटा वही दो फॉर्मूले जो पीछे वाले थे उसमें हम वैल्यू रख देंगे और इसकी हमें वैल्यू सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, and the value of tau theta which gives the result of minus 48.97. okay, so basically यहाँ तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बता के न्यूमेरिकल बता रहे, जब हम मोर सर्किल आगे पढ़ेंगे तो हम इसका डिटेल में कई सारी चीजें हम निकाल लेंगे. जैसे ये न्यूमेरिकल की बात करी जाए सिंपली, सो ये आपका सिग्मा एक्स हो गया, वाई हो गया, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 45 MPa, tan थीटा 4/3 ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर. तो पहले ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन लगा के थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे, टाउ एक्स वाई आपका 0 है, उससे आप फाइनली सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों अलग अलग रख के. ओके, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. Now we are talking about the principal stresses, which is also a very important topic. So for major एक stress होगी sigma 1 and minor stress which is denoted by sigma 2. Sigma x plus sigma y divided by 2 plus minus under root sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau xy का square. So the normal stress across the principal plane is principal stress. Principal plane, the plane on which only principal stresses will be acting. तो पहले तो हम ये जान लेंगे principal stress क्या होता है. The normal stress across the principal plane is principal stress. ठीक है, and principal plane क्या होगा जिस पे सिर्फ normal stresses वर्क करती हैं. On a principal plane, shear stress is 0. If shear stress is 0 on a plane, on the perpendicular plane also shear stress is 0. In 2D system, there will be two mutually perpendicular principal planes. On both the planes, shear stress is 0. So basically, to locate the principal plane, here is the figure of components of stresses. So basically, this is the minor principal plane and this is the major principal plane. This is the major principal plane and this is the minor principal plane. उसी के रिगार्डिंग ये दो जो स्ट्रेसेस दी हुई थी, ये ली हुई थी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. ओके, assume principal plane is making an angle of alpha, this alpha from the as shown in figure. Shear stress at that plane must be 0 if it's a principal plane. अगर ये principal plane है, it means इसमें shear stress 0 होगी, जैसा कि हम इसकी basic terminology में पढ़ चुके हैं. Then tau alpha is equals to 0 sigma x minus sigma y by 2 sin 2 alpha minus tau x y cos 2 alpha. tan 2 alpha की वैल्यू इनसे सॉल्व करके निकाल लेंगे तो आ जाएगी 2 tau x y upon sigma x minus sigma y, where alpha is the angle of major principal plane and alpha plus 90 is equal to angle of minor principal plane. क्योंकि मेजर और माइनर में 90 डिग्री का एंगल होता है, alpha is the major principal plane and alpha plus 90 is the minor principal plane. Maximum shear stress is equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2 plus minus is equals to under root sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau xy का whole square. In a 2D system,
there will be two maximum shear stresses of equal magnitude but opposite in nature. Maximum shear stress planes in the plane on which maximum shear stress is acting in 2D system, there will be two there will be tau max plane, two tau max planes separated by 90 degree. The angle between any principal plane and the nearest tau max plane should be in 45 degree. On the tau max plane, there may be normal stress which is equal to sigma dash or sigma average, which is equal to sigma 1 plus sigma 2 by 2 or tau x plus tau y by 2. If sigma dash is equal to 0, then it is called pure shear stress on tau max plane, only shear stress along with acting. If sigma dash is equal to 0, then it is known as the state which is called the pure shear stress. Okay. Now here is the numerical of that 2D figure. Here the sigma x is equals to 80 degree, sigma y is equals to minus 20 degree, just because in compression, and for tau xy is equals to minus 30, just because it downward ja raha hai. So sigma 1 is equals to sigma x plus sigma y by 2 plus whole under root sigma x plus sigma y by 2 ka whole minus sigma y ka whole square plus tau xy ka square. So by this formula we can calculate the value of sigma 1 and sigma 2 respectively. एक plus की value, एक minus की value. Okay. Now sigma tau m is equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2 is equals to 88.31 minus 28.309 by 2 is equals to 58.309 आ गई आपकी, और sigma dash is equal to sigma 1 plus sigma 2 by 2, इससे आप एवरेज निकालेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30. So basically these are the basics of that particular principal stresses and principal planes in a 2D format. And these topics will are covered in the complex stress and strain portion. Okay. Now the most important topic is Mohr circle, which will be basic में अभी बता देता हूँ, बाकी इसका डिटेल स्टडी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में Mohr circle करेंगे. ये हमारा फाइनल टॉपिक बच रहा है इसके बाद इस यूनिट का. ओके. सो कोई दिक्कत नहीं है, काफी आसान सारी चीजें हैं, बस एक चीज जो ध्यान रखनी है आपको, दैट इज द डायरेक्शन पॉइंट. ओके. विच अब आगे आपका मोहर सर्किल. सो मोहर सर्किल ग्राफिकल मेथड है किसी भी स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का, और which is given by the Otto Mohr, basically developed for, this is developed for 2D plane shear stress diagram or system. Basically, center of Mohr circle lies on the x-axis where normal stress is represented. The distance of center of Mohr circle from origin is sigma dash or sigma average. So basically, जिसको हम अभी तक calculate करते हैं sigma dash और sigma average is equal to sigma 1 plus sigma 2 by 2. इसमें क्या करना है कि एक सर्किल पर फॉर्म हो रहा है आपका, which gives the value of sigma dash or sigma average. Basically, this is the distance of center of Mohr circle from the origin. Okay. So by this we can calculate all these things, and after that some of the basic special cases are performed in this Mohr circle phenomena or Mohr circle topic. We will study it in detail later, and after that we can easily solve some numericals of that particular topic. Also, this is the very important topic of this module 1. Okay. So in the basics of this Mohr circle, first of all we are going to study for this for 2D plane, and after that we will study for the 3D plane in next lecture. So basics of this Mohr circle is that it is basically developed for 2D plane stress system, and the center of Mohr circle lies on the x-axis where the normal stress is represented. So
मोर सर्किल का जो सेंटर है वो आपका एक्स एक्सिस पे रहता है, जहाँ पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंटेड रहती है. ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द मोर सर्किल फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड sigma dash or average stress. Now the average is also denoted by sigma x plus sigma y by 2 or sigma 1 plus sigma 2 by 2. Here is a figure of that 2D plane in which we can calculate by this the radius of Mohr circle, which is by tau max, which is under root sigma x minus sigma y by 2 to the whole square plus tau xy to the whole square, or is equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2. Okay, so this is the basic figure of that Mohr circle for a 2D phenomena or 2D plane. Each radial line drawn to the Mohr circle is a plane in the material or element. The point on the circle corresponding to the radial line gives the coordinate of normal and shear stress on the plane. Here, C is the major principal plane and CB is the minor principal plane. Okay. CA is the major principal plane and CB is the minor principal plane. CA and CB, major principal plane and minor principal plane. जैसा कि हम इसके पहले पीछे पढ़ चुके हैं. CD and CE is the tau max plane. CD and CE, this CD and CE is the tau max plane. All the angles at the center of Mohr circle are twice of actual. Here OH is equal to sigma x, OH is equal to sigma x. Okay. This and OI is equal to sigma I. OI, ये H है, ये I है, ठीक है. OH is equal to sigma x and sigma y is equal to OI. HF is equal to minus tau xy and IG is equal to tau xy. IG, okay. And HF this value, HF is equal to tau xy. Now we are proceeding for the special cases for a one-dimensional system. The best example for this is tie bar or strut. Here one-dimensional है तो उसका एरिया A रख लिया और P पॉइंट तक इसको करा तो सिग्मा x की वैल्यू सिग्मा हो जाएगी, बाकी सब जीरो हो जाएगा. OC is equals to sigma x to sigma y by 2, खाली sigma by 2 बचेगा and radius is equal to under root sigma x minus sigma y by 2 the whole square plus tau xy, which is sigma by 2. This is the Mohr circle. Next one is pure shear. If sigma is equals to 0 on tau max plane, it is pure shear condition. Any element on the axis of a beam, element on surface of shaft, and any element at the support of beam. So basically, this is the phenomenon of the pure shear, where sigma x is equal to 0, sigma y is 0, and tau xy is equals to only tau. So when the sigma x and sigma y are 0, then also the average stress will become 0, and radius and tau max is equal to radius tau max is equal to tau. Okay. If center of Mohr circle coincides with origin, it is a pure shear condition. मतलब Mohr circle का जो center है वो अगर coincide करेगा origin से, then it is a pure shear condition. Okay. This condition. This is pure shear condition क्योंकि Mohr circle का center और इस center origin से coincide कर रहा है. That is pure shear condition. Where sigma 1 is equal to sigma, sigma 2 is equal to minus sigma. Average लेंगे 0 आ जाएगा. ये देखिए यहाँ पे 0 आ गया. टाउ एक्स वाई की वैल्यू 0 रहेगी एंड टाउ मैक्स की वैल्यू सिग्मा ही रहेगी. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बीम्स, देन transverse load is applied on the beam which is normal to the axis of beam. The shear stress will develop between layers and tension or compression will act along the axis of the beam. Tension और compression तो axis के along लगेगा, but
the shear stress will develop between the layers, and the normal stress in the direction of load is always zero in beams. It means sigma x is equal to sigma y is equal to 0, and tau xy is equals to tau basically. And average stress is equal to sigma by 2, and radius is equals to sigma by 2 under root sigma by 2 the whole square plus tau square. In beams, principal stress will be opposite in nature because of bending. One face of beam is under tension and the other face is under compression. Okay, so it is clear that the beam का एक portion total compression में रहेगा, एक portion total tension में रहेगा. It means sigma x sigma y की वैल्यू तो कुछ ना कुछ रहेगी, it means दोनों की सिग्मा हो जाएगी, but tau xy जो रहेगा वो आपका 0 रहेगा. Okay, this value. Okay, or this, if we are talking about the isotropic condition, the sigma x sigma y will be the value of sigma, and tau xy will be 0, and the radius is equal also a 0, and OC is equals to sigma. And for isotropic condition, on the other surface of thin sphere at a point in all the directions, only hoop tension will be acting without shear stress, called isotropic condition. For isotropic condition, as we also know, only hoop stresses are working. So now for the isotropic condition, here the sigma 1 and sigma 2, here is the axis or the graphical representation of these minus sigma plus sigma, sorry plus sigma minus sigma, इधर plus tau इधर minus tau हो गया. sigma x sigma y की वैल्यू कितनी होगी, minus tau and minus tau दोनों की, tau xy 0 ही है आपका. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्टैटिक. तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन. ऑन द सबमर्ज्ड बॉडी अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंडीशन shear stress is 0. There will be only change in volume without distribution of dispersion of shear. It is also clear कि अगर कोई सबमर्ज्ड बॉडी है तो उसमें स्ट्रेस चेंज जो आपका होगा, वॉल्यूमेट्रिक चेंज तो होगा, बट उसका शेप चेंज नहीं होगा. ओके, नाउ a numerical is performed. In this, we can see that sigma x, sigma x और y is equal to 30. सब कुछ 30 आ रहा है इसमें, और ये रहा इसका फिगर. ओके, उसके बाद आता है हमारा 3D stress system, which will be discussed in next lecture. So here is the basic terminology of the Mohr circle. Mohr circle is the graphical representation of stresses at any structural element. Basically, also in previous lecture we studied to find the stresses developed in any particular structural member, but the Mohr circle gives the graphical representation of that stresses in any structural member. Basically, we studied the 2D format of this Mohr circle. In next lecture, we will study the 3D format of this Mohr circle. So, thank you.